हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक स्मार्ट लर्नर्स। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। इन टुडेज वीडियो वी आर शेयरिंग विद यू सम स्पोकन इंग्लिश phrases without which you cannot learn to speak English. If you want to speak English, you have to speak long sentences. And to speak long sentences, you have to memorize all these phrases very well. If you remember these phrases well, then you can take your speaking English to a different level. Our first word, till now. Till now, अब तक इंडिया हैव स्कोर्ड 200 विदाउट लूजिंग एनी विकेट टिल नाउ। भारत ने अब तक बिना कोई टिकट खोए 200 रन बना लिए हैं। इंडिया हैव स्कोर्ड 200 विदाउट लूजिंग एनी विकेट टिल नाउ। अवर नेक्स्ट वर्ड, थ्रूली। पूरी तरह से या सावधानी के साथ और पूरी तरह से। यू शुड स्टडी इंग्लिश थ्रूली। यू शुड स्टडी इंग्लिश थ्रूली। आपको अंग्रेजी का गहन अध्ययन करना चाहिए। We truly enjoyed our holiday. We truly enjoyed our holiday. हमने अपनी छुट्टी का पूरा आनंद लिया। Although, हालांकि, यद्यप या बहरहाल। Although she was tired, she stayed up late watching television. Although she was tired, she stayed up late watching television. हालांकि वे थकी हुई थी फिर भी देर तक टीवी देखती रही। एट लीस्ट, कम से कम, किसी भी तरह। एट लीस्ट, इट विल टेक अस एटलीस्ट 2 hours to get there. इट विल टेक अस एटलीस्ट 2 hours to get there. वहां पहुंचने में हमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यू कुड एटलीस्ट से सॉरी। You could at least say you are sorry. You could at least say you are sorry. आप कम से कम कह सकते हैं कि आपको खेद है। So far the weather has been good, but it might change. अभी तक मौसम अच्छा रहा है लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। I bought a new washing machine and so far it works brilliantly. मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी है और अब तक ये शानदार ढंग से काम करती है। I bought a new washing machine and so far it works brilliantly. Now you have to answer this question in the comment box. Meanwhile, इस दौरान. And what you have to do, you have to make sentences by using this word. Okay? Alright, that's for today's video. For now, keep practicing, keep learning, and don't forget to like this video, subscribe to our channel for more lessons, and hit the notification bell so you will stay updated. Until next time, happy learning and expressing.